Hi and welcome to Knowledgist. We are here today with a very good session for freshers, those who want to pursue their career in banking industry. And I got so many questions in last 1 or 2 weeks about a new opportunity that is there in Axis Bank Young Bankers Program and Priority Banker Program. But before that, I will give you complete information on this two programs, whether you join or not. This will be a complete session for all of you. But before that, I urge all of you to kindly subscribe to Knowledgist. And at the end, I will be answering your specific questions, your specific queries. आज के इस एडिशन में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में, यंग बैंकर प्रोग्राम और प्रायोरिटी बैंकर प्रोग्राम. ये कंप्लीट सेशन होने वाला है और इसके बाद आपको पता चल जाएगा और आप वो कंडीशन में आ जाओगे कि डिसीजन ले पाएंगे, ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है. और मैं ये भी बता दूं कि आई हैव वर्कड इन एक्सिस बैंक एज वेल. मैंने भारत के सबसे बड़े सारे बड़े बैंक में, पहले प्राइवेट सेक्टर में, बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक में काम किया हुआ है. तो आई नो दैट what are the real work culture and what is going to be a great career decision and a destructive career decision. Sometimes कुछ decisions ऐसे होते हैं, उसको लेने के वजह से आपका कैरियर पूरा स्पॉइल हो जाता है. ठीक है, तो ये एक ऐसा ही डिसीजन है. दिस विल मेक और ब्रेक योर कैरियर. सो बिलीव मी, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वॉच टिल द एंड एंड काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. मेरा ज्यादातर वीडियो लैटरल एंट्री के ऊपर रहता है और वी आर नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ लैटरल एंट्री सेगमेंट in banking, but still I made this video for the freshers so that in coming days the freshers will also be part of this lateral entry segment which is grooming day by day. और आप आज फ्रेशर हो, कल एक्सपीरियंस्ड बनने के बाद you will be also joining public sector bank as a experienced candidate. तो उससे पहले I will urge all of you again to kindly subscribe, okay? Because we want to give complete and factual advice to our students, right? So let's begin it. मैं आपको स्क्रीन पे भी ले जाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कहाँ तक है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ देम. और हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है knowledgist.in पर. जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन एनी टाइम. ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है. Those who want to prepare, they can prepare with us as well, and we will give you complete material and details. But before that, is it a good decision or a bad decision? ठीक है, जॉब रोल कैसा है, पहला सवाल. How is the job role? Okay, what is the job role? So let me tell you, just a second, let me tell you, this is one of the worst banking jobs available in India. I'm giving you a factual piece of advice and piece of information as I have been worked in Axis Bank and ICICI Bank and other banks, other public sector banks. I don't want to name them, but yes, so it's one of the worst available jobs in India. Should you join or not? The next question comes, yes, it is a worst job. So is that mean that you should not join? No, you should join. Okay, I will tell you why. I am going to tell you why. If you ask me कि जॉब रोल कैसा है, किस तरह का जॉब है, जॉब घटिया है. ठीक है, I am brutally honest. ठीक है, nobody can sue me because I have been part of it. I have seen the work culture and I am the only person who have raised so many questions to the up to the CEO level of Axis Bank about the work culture inside Axis Bank. So I have all the data with me to prove that, right? So I don't want to bring any legal repercussions to my channel and to me, but because I have in the possession of so many documents, so I can prove it, right? Yes, it's one of the worst available works jobs in India. Let me tell you, frankly, let me tell you, I have been part of it. Okay, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए अगर आपके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है. ठीक है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट. पहला चीज देखिए, कैरियर का एडवाइस सब देते हैं. ठीक है, आपको कैरियर का एडवाइस सबसे लेना चाहिए, बट करना अपने मन की ही है. ठीक है, यू टेक योर डिसीजंस इन लाइफ.
always be that much of responsible to take your decisions in life, so that for your failures you should not blame others. And this is so disappointing that when you fail and start blaming others, many people come to me and say that, sir, I have taken this person, one of my friend gave me a bad advice, and for that I landed into trouble. He gave me a bad advice about stock market, I invested in that stock and I failed, my so much of money got eroded. But I always tell them, he has just given you a piece of advice, but it was you who decided, who took a decision to obey him, and that's why you failed. So always take responsibility if you want to win in long run. ठीक है, एडवाइस सबसे लीजिए, अपने घर वालों से भी लीजिए, मगर दिल की करिए. टेक योर ओन डिसीजंस. दिस इज द फर्स्ट ट्रेट ऑफ सक्सेस, राइट? देखिए, पहला सबक, पहला चीज, I have started my job in a private bank, in a probationary officer level in ICICI Bank. Let me be that frank. Okay, but I have done wonders in my life. Okay, and I have been regarded as one of the most celebrated bankers in India. But why? Because I have not stopped reading. This much I can tell about myself. Because the only thing that I have done is that I have not stopped reading. I have cracked civil services in my first attempt being in ICICI Bank, though I couldn't make it in interviews due to the heavy workload in ICICI Bank. But still, I have done it, and I have cracked all lateral entry exams, and I directly got selected in public sector bank as a scale 3 only because I have continued to read. So if you don't have any other opportunity in your hand, then you can join. Okay, those who are knowledgeable persons, those who know that they can do wonders in life if opportunity is given to them, they don't hesitate to join any field. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आपकी औकात आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगा. It is who finishes the line first. आप कहाँ पहुंचते हो वो इंपॉर्टेंट है, आपने कहाँ से शुरू किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, और ये आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आजकल जो पब्लिक सेक्टर बैंक में कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस में आप डायरेक्ट स्केल 2 बन सकते हो. ठीक है, एंड स्केल 2 इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज अ वेरी गुड जॉब. आप पीओ भी ज्वाइन करते, IBPS पीओ एग्जाम देके, SBI पीओ एग्जाम देके क्वालिफाई करना, इट्स वेरी टफ जॉब. बट इफ यू ज्वाइन दिस वन, okay, which is the selection is a cakewalk. I must say this selection is very easy, cakewalk. Once you got selected, you can join public sector bank as well if you have the passion inside. अगर आप में कोई और जॉब क्वालिफाई करने के लिए आपके पास औकात नहीं है, let me be that much harsh because I am making a fair analysis. Or those who talk sweet, they kill your they kill you. ठीक है, किसी पेड़ को अगर मारना है तो आप उसके नीचे बहुत सारा पानी दे दीजिए और वो पानी का आदी हो जाएगा. मतलब he will not learn how to grab water from deep earth. So जब किसी को एडवाइस देना है ना, you should give some tough advice. ठीक है, मीठा, अगर अपने मम्मी के अलावा अगर दुनिया में कोई आपको मीठे शब्दों से बात करता है ना, वो चूना लगा रहा है. ठीक है, आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ समवन स्पीक्स स्वीट टू यू एक्सेप्ट योर मदर, देन he is going to cut your pocket. Okay, so don't fall with the those who give you sweet advice. So हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके पास औकात नहीं है ना कोई और जॉब क्वालिफाई करने के लिए, तो ये जॉब तो बेटर है ही. अगर आपके पास औकात है तो ये तो बस शुरुआत है, आप बहुत दूर जा सकते हैं. ठीक है, और इसमें कुछ काम आए ना आए, जितना दिन आप यहाँ पे रहोगे ना, 1 साल या 2 साल, कम से कम 2 साल का रहने के लिए मैं बोलूंगा, या फिर आप किसी और बैंक स्विच भी कर लीजिए. 2 साल का एक्सपीरियंस आपको सीधा स्केल 2 में लैंड करा सकता है, जिसके लिए आपको बहुत, अगर अदरवाइज आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते प्रिपेयर करने में, IBPS PO एटसेट्रा. ठीक है, एंड यू शुड नॉट स्टॉप रीडिंग. हाँ, एक बात है कि मुझे सवाल पूछते हैं, एक बार ज्वाइन कर लूंगा, घटिया वर्क कल्चर है, उसके बाद प्रेशर आएगा, LI बेचो, ये बेचो, वो बेचो, तो मैं क्या करूं, टाइम नहीं मिलेगा.
I will not get time because of worst work culture. My boss will say, do this, do that. I always tell, if I can do being in public private sector banks, being in senior positions in private sector banks, then you can do as well. But and there is a simple formula for that. What you love to do, you find time to do. जो काम करने के लिए आप में पैशन है ना, उसके लिए वक्त आप अपने आप मिल जाता है, ठीक है, अपने आप मिल जाता है. यू विल गेट टाइम ऑफ योर वर्क. और अगर आप में क्वालिफाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जज्बा है, इफ यू हैव द पैशन टू गो अहेड, 2 मिनट भी काफी होता है. 1 घंटा भी आप पर डे दोगे ना, 1 घंटा छोड़ दीजिए, आधा घंटा भी पर डे दोगे ना, आपको लेटरल एंट्री में अच्छा मौका मिलेगा. और आई ऑलवेज से, इट इज नॉट वेयर यू स्टार्टेड, इट इज वेयर यू फिनिश्ड द लाइन. इट इज वेयर यू फिनिश्ड द लाइन. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम तो अपने आप आ जाएगा. लेटरल एंट्री में कंपटीशन उतना ज्यादा हाई नहीं होता है और क्लोज कंटेस्ट होता है. क्लोज कंटेस्ट आजकल बढ़ गया है, क्लोज कंटेस्ट होता है. बट वहां पे एक चीज मैटर करता है, योर बैंकिंग नॉलेज. अगर आप देखिए प्राइवेट बैंक में, और प्राइवेट बैंक में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि प्राइवेट बैंक में बहुत ज्यादा सेल्समैन काम करते हैं, बैंकर तो काम करता नहीं है, ठीक है. And if you will become a true banker with banking knowledge, you will do your JIIB, you will do your CIIB, etc. You will be a unique banker. और आप ग्रो भी कर सकते हो प्राइवेट बैंक में, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में मैंने जितना देखा है, बहुत सारे निचले निचले लेवल से अप टू मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है, एजीएम तक सेल्समैन होते हैं, ठीक है. दे डोंट हैव दी बेसिक बैंकर एटीट्यूड. उनके पास वो बैंकर वाला नॉलेज होता नहीं है. गाली देके, ये करके, वो करके, कुछ करके सेल्स करवा देते हैं. एंड मैंने तो ये एडवाइस एक्सिस बैंक को भी दिया था. उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ था, फिर उसके बाद वही, जब बहुत सारे घटिया लोग एक साथ आ जाते हैं तो कुछ वही होता है, ठीक है. फिर वही उनको पसंद आने लगता है, वही कीचड़, वही सब. उसके बाद चेंज करने वाला भी होना चाहिए. ओके, तो आप वहां पे भी कर सकते हो, मगर it is better to switch. It is always better to switch, not to private, private to public sector banks. तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, अगर अभी कुछ भी आपके पास नहीं है तो you join it. और उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको दूर तक जाना है, if you have decided that you have to go far away, you have to be a good banker in life, then don't take this job seriously. Don't take this job seriously. There is a bond associated with it. They will not kick you out. They will not easily kick you out. So see, you cannot excel in two things in life. That I realized in late. You cannot excel in two things in life simultaneously. So if you want to be a great banker, then join this one. Don't be serious about your target achievements. टारगेट्स जो प्राइवेट बैंक में दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट में दिए जाते हैं, वो अचीव करने के लिए होते नहीं है. सो डोंट टेक देम सीरियसली. टेक योर रेगुलर टारगेट्स ऑफ रीडिंग सीरियसली. बॉस बोलता रहेगा, उसका लाइफ साइकिल कम होता रहेगा. एवरी सिंगल सेकेंड समवन गेट्स एंगर्ड, he loses 4 seconds of his life. So kill your boss with a slow poison. Let him shout at you, and be cool. And it is not that difficult to remain cool when your boss shouts. It is not that difficult, because when you know that where can he go, and when you understand that where you are destined to go, then you will understand the difference. He has born to shout, but you are born to prove yourself, right? तो आप बदल सकते हो. चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूं कहाँ पे ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं. और ये तो मैं आ गया स्क्रीन पे, ठीक है. तो ये PRBM प्रोग्राम है. दिस इज द PRBM प्रोग्राम, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, दैट इज अवेलेबल विद NEET, NIAT. इट इज प्रायोरिटी बैंकर्स प्रोग्राम. 5 lakhs पर एनम, बस 20 से 25,000 के आसपास सैलरी मिलता है, ठीक है. वो दैट इज CTC, एंड डोंट गेट अ ट्रैप ऑफ इट. एंड दिस इज नॉट अ गुड जॉब, आई एम टेलिंग यू. Okay, this is not a good job, but this can be a launch pad for you. I am telling you, this can be a launch pad of you if you join it, and if you don't take your job seriously, and if you eye a good job in public sector bank, then this could be a launch pad for you. I think people are watching me. Yes. Okay.
Kalwa Sampath, I will tell you at last about the Canara Bank SO result. Don't worry. I have the information with me. Don't worry. Okay. So in it, they will give you a bond. That means there will be educational loan of 2.25 lakhs. Essentially, they will provide you. So that is just a trap, but you can trap them as well. You can trap them as well. Okay. So yes, this is you will earn some stipend at first. Then you will join at a 5 lakh salary package in privileged banker segment, and you will be getting roughly something around 30,000, almost 30,000, not beyond that. These are the gimmicks only. Okay, so wait a second. And here the Axis Bank Young Bankers program, this has ended yesterday. So those who have already applied, they can check it out in knowledgist.in for a detailed course we have launched here in our website. Okay, so this is it. Let me tell you about the eligibility. Yes, where is the eligibility? Why forget all of them? Okay, so salary after this young banker program is 3 to 4 lakhs, so roughly around 20,000. Yes, don't divide the entire cities into 12. That mistake I have done way back in 2011. I thought it's a good job, but proved to be a nuisance one. Okay, so the eligibility is 50% above. I hope you will get all that in the website. That I don't need to waste your time. But this much of information I wanted worth sharing to you. There will be a remote test. Then they may take a interview of yours that will make that our experts, our bankers will tell you, our educators. We have appointed someone for these two programs and coming programs in Manipal Academy, like ICICI Manipal, Baroda Manipal, etc. We have someone who is teaching in our platform right now, so you can join us. Okay. And yes, one thing I always tell to my students is that once Vivekananda has told that these extraordinary people don't do anything extraordinary. They do the same ordinary thing, but in an extraordinary way. तो आप कोई भी छोटा काम या बड़ा काम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली करोगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं है आपको यूनिक बनने के लिए, आप वही सेम काम कीजिए बट try to give an extraordinary approach to it. Okay, so ये था इस एडिशन में. अच्छा, मैं मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का एक क्वेरी रिजॉल्व कर देता हूँ. कनारा बैंक एसओ मेरा कल बात हुआ था. it is prepared due to some administrative reasons. It is in hold, so it will be released in few days. Okay, यूको बैंक में मेरा बात नहीं हुआ है, and Canara Bank, yes, I have discussed due to some reasons, that is some administrative reason. Okay, so it will be released anytime soon, but they have not told me the exact date. Maybe in this year, in this month, April, it will be released. Okay, results are ready way back in last week of March. Okay, but due to some administrative reasons, some requirement issues, because this manpower planning related issues are there. So how much of intake they should take, and yes, there are very what I got is that they have not found that much of overwhelming response from the students while applying for these posts. And then there are few posts which are going to remain vacant even after the exam. Okay, even after this process. So anytime in the month of April, they will release it. Okay, it is prepared. Anytime it will be released. Okay, so this much of information I wanted to share with you. And if you have any question regarding this video, the Axis Bank issue, you can ask me here in this video's comment section. My team of experts in Knowledgist will be answering them to you. And all of us, those who are here in Knowledgist, are senior experienced bankers. So we give only trusted information to our students. We believe your career is as important as ours. So a right decision that should be taken by you. I will not give you decisions. I will give you a piece of advice, but you have to calculate yourself. You have to take your decisions. If you will not be a man of your own decisions, you will be at nowhere in this changing world.
So take your own decisions, take advice from every single person. And yes, don't take so much of advice, don't take so much of advice. Try to choose a reliable source, only one reliable source, and try to check the authenticity of the one who is educating you. It is very important. I always say, the one, don't trust blindly everyone, trust the ones who have proved themselves in their life. Okay, so thank you for watching us. At the end, I must tell all of you to kindly subscribe if you have not subscribed. If you liked what I have told you, if you think that this is going to be useful in your life, then do hit subscribe and tell your friends to subscribe, because this is your lookout that how your channel will grow, because I dedicate this to all aspiring